Today we will discuss about the detection of drug interaction in the topic adverse drug reaction in subject pharmacy practice BP 703 TT. See, last time we discussed about the drug interaction. In that we have discussed about the beneficial interaction. Also we discussed about the adverse drug reaction or adverse interaction. Then pharmacokinetic drug interaction and pharmacodynamic drug interaction. Now in this video we will discuss about the method for detecting drug interaction. देखिए यहाँ पे बहुत सारे सोर्स है ड्रग इंटरेक्शन. यहाँ पे इस वीडियो में टोटली वी आर फोकसिंग ऑन अ ड्रग इंटरेक्शन. ड्रग इंटरेक्शन के बारे में हम फोकस कर रहे हैं कि ड्रग इंटरेक्शन के बारे में हमको पता कहाँ से चलेगा. देखिए बहुत सारी मेडिसिन है दैट इज यूज्ड. पेशेंट भी बहुत अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं बहुत बार, या फिर अलग अलग फार्मेसी स्टोर को कंसल्ट करते हैं मेडिसिन लेने के लिए. तो इसी कंडीशन में ड्रग इंटरेक्शन अगर कहीं पे आ जाता है तो मालूम कैसे पड़े, कैसे मालूम चलेगा. तो देयर आर सम सोर्सेस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, दैट इज इन विट्रो एंड एनिमल्स डेटा, देन केस रिपोर्ट, clinical study reports, review article we can say, then monographs, book sources, then drug tables, drug charts, drug data sheets, drug interaction websites and literature. तो ये सब sources है कि जहाँ से हमको पता चलेगा कि drug interaction, पहले तो drug interaction हो रहा है और कौन कौन सी drug के बीच में interaction है. So we will see this one by one. First one, in vitro and animal data. See, this gives the information from in vitro studies and animal experiment is helpful in identifying the mechanism for an interaction. देखिए in vitro मतलब शरीर के बाहर, in vivo मतलब शरीर के अंदर, मतलब यहाँ पे एनिमल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और in vitro studies. देखिए स्किन के ऊपर भी स्टडीज हो सकती है, दैट इज आल्सो इन विट्रो स्टडीज. तो दोनों तरीके से इन विट्रो और एनिमल डेटा के ऊपर से वी कैन डिटेक्ट अबाउट द ड्रग इंटरेक्शन. देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें ड्रग इंटरेक्शन के बारे में ये एक स्टडी की है. एक जर्नल का आर्टिकल आपको दिखाता हूँ. सी दिस वन, इन विवो एंड इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शन स्टडी ऑफ ग्लिमेप्राइड जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए यूज होता है, दैट इज ओरल एंटी डायबिटिक, एंड विथ एटोरवास्टेटिन एंड रोजुवास्टेटिन. these are the statin drugs that is used for the lipid lowering. देखिए यहाँ पे एक ड्रग इंटरेक्शन स्टडीज दिया गया है, इन वाइवो एंड इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शन स्टडीज इन बिटवीन दिस टू. So this is one of the article and they have done the research. This is one of the research journal of Young Pharma, and on the basis of this we can understand, see, there is a drug interaction in between glimepiride with atorvastatin or glimepiride with the rosuvastatin. Whether there is a drug interaction or drug interaction यहाँ पे है या नहीं, ऐसे आर्टिकल के ऊपर से हमें पता चल सकता है. So this is one of the thing कि इन विट्रो और इन वाइवो जो भी है डेटा, वो ऐसा हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं और ऐसा डेटा के ऊपर से we can understand whether there is a drug interaction that is present or not. Then recently work on the cytochrome P450 isoenzyme system is an example of the value of in vitro experimentation. देखिए one of the guideline is there. I want to show you that guideline regarding in vitro drug interaction studies, cytochrome P450 enzyme and transporter mediated drug interaction. This is the guidance for industry, and this guidance that is given by US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research. मतलब US FDA जो है उन्होंने ये गाइडलाइन दिया है, that is for the industry purpose, that is published in the January 2020. देखिए यहाँ पे एक गाइडलाइन में some index, we will follow the index evaluating the metabolism mediated drug interaction and
information about evaluating the transporter mediated drug interaction. Then यहाँ पे जो data दिया है, that is final guidance is intended to help the drug developer plan and evaluate the studies to determine the drug-drug interaction potential of an investigational drug product. मतलब अगर कोई investigational drug product है जिसका already research चल रहा है, that is not in a market but the clinical trial is going on, for that some ideas or general guidelines they have published regarding to determine the drug-drug interaction. The final guidance focuses on in vitro approaches to evaluate the interaction potential between the investigational drug with cytochrome P450 enzyme and transporter. मतलब यहाँ पे drug interaction with the cytochrome P450 है या नहीं, and as well as how in vitro result can inform future clinical drug-drug interaction studies. मतलब on the basis of in vitro result we can predict the clinical drug-drug or we can say about the drug-drug interaction studies. So this is one of the guideline. ये एक गाइडलाइन प्रोड्यूस किया है FDA ने. इसमें आपको साइटोक्रोम P450 के साथ में जो भी इंटरेक्शन है तो उसके लिए क्या रिएक्शन, क्या कैसे प्रोसीजर है, वो सब दिया गया है. And also the new drug investigation new drugs involves that identifying the principal route of the drugs elimination, estimating the contribution of enzyme and transporter to the drug disposition, and characterizing the effect of the drug on enzyme and transport system. So these are one of the guidelines that has been given by the US to study about the drug-drug interaction. This guideline that is specially given for the industry. Then animal and in vitro information cannot reliably predict that an interaction will occur in human, as human pharmacokinetic and pharmacodynamic process and physiology are not represented. देखिए यहाँ पे हर बार हम ऐसा नहीं कह सकते कि एनिमल के ऊपर हमने अगर स्टडी किया है और इन विट्रो इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि यहाँ पे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, तो सेम थिंग दैट कैन बी हैपन इन द ह्यूमन आल्सो, बिकॉज in human the pharmacokinetic and pharmacodynamic process that is little bit different if we are considering in vitro study or animal study. So always we need to check in a human also about this interaction data. So this is regarding in vitro and animal data. From this source we can understand about the drug interaction. Then case report. Interaction are often first identified as a case report or letters that is published in a medical journal. देखिए मेडिकल जर्नल में बहुत बार डायरेक्टली, अभी हमने एक एग्जांपल देखा, वैसे ये केस रिपोर्ट डायरेक्टली पब्लिश हो जाता है या फिर पब्लिश कर सकते हैं, और रिपोर्टेड टू अ फार्मेसी विजिलेंस प्रोग्राम. देखिए फार्मेसी विजिलेंस प्रोग्राम, दिस इज आल्सो कलेक्शन ऑफ द डेटा रिगार्डिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है. देन केस रिपोर्ट are a useful source for identifying interaction between the infrequent used medicine combination or for rarely occurring interaction. देखिए केस रिपोर्ट जनरली क्या होता है कि ये केस रिपोर्ट पहले तो कोई जर्नल में पब्लिश हो गया, तो केस रिपोर्ट जब पब्लिश होता है पहले तो इसकी रिलायबिलिटी दैट आल्सो इट शुड बी चेक रिलायबल है या नहीं, बिकॉज मोस्टली कुछ जर्नल ऐसे भी है जो कि they are not going for the peer review. Peer review मतलब क्या है कि peer review में ऐसा होता है कि whatever the study or whatever the case study they have reported and that will be evaluated by some person or some people who are expert in that particular area. तो peer review journal में जो भी publish हो रहा है तो उसको हम authentic मान सकते हैं, लेकिन always we need to check about this. Now this report for identifying interaction between infrequent used medicine combination or for rarely occurring interaction. Infrequently used medicine मतलब क्या है कि जो medication हम always combination में use नहीं करते हैं, और rarely that is going to be given in a combination. तो यहाँ पे ऐसे case report अगर कहीं पे publish होता है, for example now 10 cases that is reported for a very infrequently used combination of medicine would suggest this is likely to be a frequent and notable interaction when this medicine are taken together. देखिए अगर यहाँ पे infrequently used medicine था
तो अगर हमें कोई ऐसा केस या रिपोर्ट मिला है, एक रिपोर्ट मिला है, दो मिला है, देन इन दैट कंडीशन, और यहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन if there is a 10 cases that is reported, देखिए if we have cluster of report and which shows that there is a drug interaction in between these two, then always we need to consider, and in such a condition, see previously हम क्या बोलते थे कि infrequent use medicine combination, लेकिन 10 केस है, इससे ज्यादा केस आ रहे हैं कि ये दो मेडिकेशन अगर हम यूज कर रहे थे, there is a drug interaction. Now in this such a condition, this is a notable interaction when these medicines are taken together. So always we need to consider such a report. So on the basis of one of the thing we need to consider, that is the case report. On the basis of case report, देखिए अगर कोई case report है तो there is also one of the guidance or one of the guide for evaluating the case report. देखिए पहले we need to consider about the timing. Can the reaction be related to the introduction of one medicine? देखिए अगर कोई केस रिपोर्ट है उसको स्टडी करना है तो we can ask such a question or we can derive the source like this. For example, we need to consider the timing. Can the reaction be related to the introduction of one medicine? मतलब यहाँ पे whatever the reaction, अगर कोई drug interaction के कारण adverse reaction आया है तो whatever the reaction that has been produced to the patient, that is due to one medicine, मतलब एक ही मेडिसिन दिया गया था पेशेंट को या फिर patient was taking more than one medicine. Then D challenge, that means it is a response that is observed for the reduction or disappearance of the adverse drug reaction on withdrawal of a drug from a patient. देखिए हम जब भी विड्रॉ कर लेते हैं ड्रग, अगर यहाँ पे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया है और ऐसे केस में वी आर विड्रॉइंग द ड्रग फ्रॉम अ पेशेंट, सो इन दिस केस देयर इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ सच रिस्पांस और नॉट, मतलब अगर हमने मेडिकेशन बंद कर दिया है तो यहाँ पे ये जो भी एडवर्स रिएक्शन आ रहा था तो वो बंद हो रहा है या नहीं. डिड द रिएक्शन सीज व्हेन द सस्पेक्ट मेडिसिन वाज स्टॉप्ड, मतलब जब भी हमने बंद कर दिया है मेडिसिन अगर हमें यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिला है और फिर पेशेंट को बोला कि भाई अब ये ड्रग है वो बंद कर दीजिए, बंद करने के कारण ये स्टॉप हुआ है या नहीं रिएक्शन, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डी चैलेंज. देन रीचैलेंज मतलब अब फिर से वही ड्रग हमें पेशेंट को देना है. देखिए जो ड्रग हमने बंद कर दिया है वही ड्रग अगर हम पेशेंट को फिर से देते हैं, सो अगेन जो भी रिएक्शन आया है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, that we need to consider in a re-challenge. Did the reaction recur when the suspected medicine was reintroduced? मतलब फिर से हमने अगर वही मेडिकेशन इंट्रोड्यूस की है या फिर वही मेडिकेशन हमने पेशेंट को दी है, then again the reaction starts or reaction that occurs again or not. So these are some few questions that related to guide for evaluating the case report. Then some another questions are there. Other medicines, can the reaction or interaction be explained by other medicine the patient was taking? मतलब यहाँ पे जो भी रिएक्शन आ रहा है या फिर जो भी रिएक्शन है that is that is due to the other medicine, या फिर कोई पेशेंट ने अदर मेडिसिन वो टाइम पे ली है या नहीं. Then other explanation, are there other factors that could explain the reaction? For example, underlying disease, मतलब दूसरी कोई disease भी है पेशेंट को, emergence of new disease, मतलब कोई नई disease, जैसे कि अभी कोरोना डिसीज जब भी स्टार्ट हुई थी तो वो टाइम पे कोई भी रिएक्शन या फिर सिम्टम दिखाई दिए होंगे पेशेंट को, तो इमरजेंस, देयर इज ए इमरजेंस ऑफ न्यू डिसीज. देन डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस, बहुत बार डाइट भी बहुत बार इफेक्ट करता है, तो डाइटरी चेंजेस अगर कोई पेशेंट ने की है या फिर इन द लाइफस्टाइल, स्लीपिंग टाइम, दैट इज आल्सो नीड टू बी कंसीडर्ड, तो ये भी एक लाइफस्टाइल में आता है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस होगी है, या फिर the dose has been changed. So these are the other explanation factor that we need to consider when we are studying any case report. तो यहाँ पे ये कंसीडर करना चाहिए कि कोई और चीज से भी ऐसा एडवर्स ड्रग रिएक्शन
आ सकता है, तो ये भी हमें एक बार कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। देन मिसिंग इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन गिवन बाय द ऑथर्स बट वुड स्ट्रेंथन और वीकन द एविडेंस। देखिए एक बार हमने पूरा केस स्टडी कर लिया है, उसके बाद में भी वी नीड टू कंसीडर दैट ऐसा कौन से फैक्टर है या फिर कोई दूसरी ऐसी कोई चीज तो नहीं रहेगी जिससे ये इंटरेक्शन बढ़ सकता है या फिर इंटरेक्शन है वो कम हो सकता है। सो वी नीड टू कंसीडर द अदर फैक्टर आल्सो व्हिच मेक द इंटरेक्शन स्ट्रेंथन और वीकन टू द एविडेंस, मतलब जो भी रिएक्शन आ रहा है उसको बढ़ा रहा है या फिर कम कर रहा है। सो दीज आर द गाइडेंस और वी कैन से द गाइडलाइन फॉर इवैल्यूएटिंग द केस रिपोर्ट। ऑलवेज इट इज हाईली रिक्वायर्ड टू हैव द रिलायबल रिसोर्स के ऊपर से ही ये पता चलेगा कि whether the drug interaction is there or not. Then clinical trial. देखिए clinical trial it plays very important role. It provides the most reliable evidence to support an interaction. To evaluate clinical trial quality, there is some guideline has been given by the consult group. One of the consult group, they are publishing the event. They are giving the guideline regarding this. We will see this. See this consult. The main product of the consult is the consult statement, which is an evidence-based minimum set of recommendation for reporting randomized trial. It offers a standard way for author to prepare a report of trial finding, facilitating their complete and transparent reporting and aiding their critical appraisal and interpretation. मतलब यहाँ पे consult है तो they will give the guidance regarding the clinical trial. So particularly on the basis of this also we can have the data regarding the drug interaction. Then small number of subject. देखिए यहाँ पे अगर clinical trial if we are doing, then small number of subject are commonly used to study the drug interaction. Then afterwards we can increase the number. Then most trial that include healthy and young males, मतलब यहाँ पे क्या है कि healthy people के ऊपर सबसे पहले trial जो भी है that will be done on a healthy peoples, because at this do not mimic the more at risk patient population who are likely to be elderly, मतलब elderly patient, उसके ऊपर we cannot perform such a clinical trial, and also on not on women जहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा होता है. then always the trial that is done on a healthy and young males. See, these are some clinical trial phase. For example, preclinical studies. तो यहाँ पे क्या होगा, in vitro जो भी drug interaction है that will be found on the basis of preclinical data. Preclinical में भी कई बार drug interaction है तो हमें यहाँ से पता चल सकता है. then the drug that will be approved for the testing on the human, preclinical का data अगर सही है then it will be approved for testing on human. तो यहाँ पे भी phase 1, 2, 3 है तो पहले initially it will be given to the 20 to 80 participant, then afterwards it will be given to the 100 to 300 participant. Then afterwards अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे result अगर सही आते हैं then afterwards that will be given to 1000 to 3000 participant. देखिए यहाँ पे अभी जो कोरोना सिचुएशन है तो यहाँ पे भी अभी ऐसा चल रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल में अभी वैक्सीन है दैट इज इन ए क्लिनिकल ट्रायल. आज ही ICMR ने भी ये गाइडलाइन प्रोड्यूस किया है कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्टार्ट हो गया है अभी. तो क्या है कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद में ही पता चलेगा कि भाई ड्रग है दैट इज सेफ फॉर द मेडिकेशन और नॉट, और देयर इज एनी प्रेजेंस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन और नॉट. Then afterwards it will go for the FDA review and they will confirm about the safety and effectiveness of the product. Then FDA, Food and Drug Administration, that will give the approval about this, and then there is a phase 4 and the drug will be approved. That means in this phase the drug will be in a market. Drug will be given into the will be sent to the market, and then also we need to consider about the drug interaction. देखिए बहुत बार क्या होता है प्री क्लिनिकल फेज 1, 2, 3 कहीं पे भी ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन आफ्टरवर्ड्स इन व्हेन द ड्रग विल बी इन अ मार्केट तो फेज 4 में यहाँ पे पता चल सकता है.
फेज 4 में जब पेशेंट यूज करेंगे तो यहाँ पे भी मतलब मॉनिटरिंग दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. सो this is the clinical trial may be drug interaction. This is also one of the source, or we can say to detect the drug interaction. Then reviews, monograph and handbook. देखिए रिव्यू आर्टिकल अभी हमने देखा, वो भी एक रिव्यू आर्टिकल था. तो इसके अलावा भी बहुत सारे रिव्यूज, हालांकि हमने जो अभी देखा इंटरनेट पे वो रिसर्च आर्टिकल था. उसके बाद रिव्यू आर्टिकल, रिव्यूज ऑन द ड्रग इंटरेक्शन, दे आर पब्लिश्ड इन द फार्मेसी लिटरेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम. फॉर एग्जांपल annals of pharmacotherapy, this is one of the journal we can say, or literature. They are publishing the drug interaction data. We will see this one. देखिए ये उसकी वेबसाइट है, annals of pharmacotherapy, and this is a peer review. देखिए यहाँ पे peer review journal लिखा है that advances pharmacotherapy throughout the world by publishing high quality research and review article to achieve the most desirable health outcomes. And these are the well designed studies of medication effectiveness, adverse event, interaction, adherence, pharmacoeconomics, pharmacokinetic, pharmacogenomics, pharmacoepidemiology, informatics, and used to positive impact patient care. तो ये जर्नल है, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे पब्लिश होता है. तो यहाँ पे भी ड्रग इंटरेक्शन डायरेक्टली वी कैन अंडरस्टैंड, एंड अगेन ओवर हियर आल्सो द लॉगिन दैट इज रिक्वायर्ड. सो वी कैन हैव द इंफॉर्मेशन, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है ड्रग इंटरेक्शन के बारे में. देन द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल is to educate the pharmacist about the interaction. Although some review will provide the reliable list for interaction screening, it is important to check for the quality and completeness of a review. देखिए यहाँ पे एक बार फिर से we need to consider कि जर्नल जो भी है या फिर हम कहीं से भी अगर डेटा कोई ले रहे हैं तो that is proper or not, whether it is a proper or not. So on the basis of this article, or we can say this is annals of pharmacotherapy, यहाँ से हमें ड्रग इंटरेक्शन के बारे में मालूम पड़ जाएगा, और we can use such a data to educate the pharmacist about the interaction. Then some useful books that contains the compilation of the drug interaction that are listed as a key reference. बुक से भी बहुत सारी बुक है, उसमें से भी हमें डायरेक्टली मिल सकता है. Then the reliability and completeness of any compilation should be verified. देखिए यहाँ पे भी वेरीफाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. And it is also important to check for the recent published information in the medical literature, especially for recently introduced medicine and infrequent interaction or rarely used medicine combination. देखिए always we need to check about the recently publishing. recently मतलब क्या है कि जो भी अभी नया recent मार्केट में जो भी नया आया है. फॉर एग्जांपल अगर कोरोना के लिए कोई वैक्सीन है तो उसके बारे में और कोई अदर ड्रग के बीच में इंटरेक्शन है या नहीं, that we need to consider or that we need to find out. So infrequent interaction, that also we need to consider. Infrequent interaction or rarely used medicine combination, that also we need to consider from the books or whatever the data we have. So we can study review, monograph, and also we need to study handbooks. Monographs that is also given in the Indian Pharmacopoeia, US Pharmacopoeia, British in Pharmacopoeia also there is a presence of monographs, so we can read that monographs. Then tables, chart, and data sheet. See, the quick reference source available to screen for known drug interaction come in a variety of forms, of which the British National Formulary tables, BNF, which is known as the BNF, British National Formulary, is one of the better known. So this is one of the source of the drug interaction. We will see over here on a website. See, this one is the website for the BNF publications. The essential reference book, which gives practical evidence-based information for the healthcare professional who prescribe, dispense, and administer medicine.
So these are the BNF. See, this one is a BNF for 1920, and the BNF for a children also that is available. This is 79, BNF 79, March September 2020 issue is there. BNF is published in an updated book from twice a year in March and September. It details all medicines that are generally prescribed in the UK with the information about the indication and dosage, contraindication, cautions, side effect, medicinal product and more. तो यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन हम यहाँ से भी ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पता चल सकता है. And the printed edition of the BNF for the children that is published in a book from book form annually. मतलब annually यहाँ पे BNF for the children that will be published. So BNF that is also one of the source for the drug interaction or to study the drug interaction. Then wall or pocket size chart. देखिए वॉल फार्मेसी स्टोर में भी हम ऐसा लगा सकते हैं कि वॉल के ऊपर हमने ड्रग इंटरेक्शन डेटा है that has been pasted और पॉकेट साइज चार्ट भी हम लगा सकते हैं या फिर पॉकेट साइज चार्ट भी आते हैं कि उसको हम रख सकते हैं पॉकेट में. एंड दिस विल गिव अबाउट द interaction and also they it mention about the warning that is associated with the any drug and also it gives very rapid identification or interaction. एकदम से हमें पता चल जाएगा रैपिड इंटरेक्शन कि चलो यहाँ पे कोई ड्रग हमने कोई पेशेंट को दिया है और that is noted in a wall on a wall or noted in our chart, then directly we can check whether there is a drug interaction or not. Then in-depth information is required to assess whether the interaction is likely to be significant and important to a patient or not. देखिए in-depth information that is required always. बहुत बार डेटा दिया है लेकिन that is significant or not or it is whether it is important to our patient or not, that also we need to consider. Then approved product data sheet, that is also helpful. Approved product data sheet from the countries such as the USA, UK, Australia, Canada and New Zealand, they are publishing, and also this data sheet that is reviewed by the local government, health agencies and also may be published on the agency's website. So on the basis of such a data sheet also we can understand about the drug interaction. Then interaction website. There are a number of websites which contain information on drug interaction. Some sites cover the specific classes of drug or condition. For example, they are giving the information about the drug interaction of herbal medicine or medicine that is used to treat HIV or AIDS. So मतलब यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है. We can go for the website also, and on the basis of website we can understand or we can have the information. Then some excellent reference like Stockley's drug interaction that are available through online subscription. For other web-based information, reliability needs to be considered with the particular care. तो यहाँ पे Stockley's drug interaction करके है तो उसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं. So which also give the information. देखिए this is the same website that is of the BNF. Stockley's drug interaction is the most indispensable source of drug interaction information available. So this also give the related information. देखिए यहाँ पे recently there is one of the information Stockley's drug interaction. This is the issue of May 2020 update that is given, and this update contains 3 new monograph and 12 revised monograph. देखिए यहाँ पे the update regarding the drug that has been given. So this is also one of the good resource we can say for the to study the drug interaction. यहाँ पे फिर Stockley's interaction checker भी है, herbal medicine interaction है, the complete drug reference, Martindale, then British National Formulary and British National Formulary for the children. Same, the link has been given in this website also. And but if you want to understand और यहाँ पे अगर हमें drug interaction के बारे में देखना है तो we need to go for a registration. यहाँ पे हमें ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें ये पता चलेगा. Then
One of the Stockley drug interaction I have, that is a 2008 edition. This is 8th edition. See the data over here that has been given. We will see the index. These are the content. They have given about the general consideration, outline survey of some basic interaction mechanism, then ACE inhibitor and angiotensin 2 receptor antagonist. मतलब यहाँ पे क्या है कि इंटरेक्शन जहाँ पे हो रहा है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल with alcohol, where if there is a interaction, we will see the example. So यहाँ पे इंडेक्स में सभी क्लास की जो ड्रग है, फॉर एग्जांपल एंटी पार्किंसोनिज्म एंड रिलेटेड ड्रग, एंटी प्लेटलेट ड्रग, तो यहाँ पे द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन, वी विल सी वन. See, in case of alcohol plus alpha blocker, the plasma level of both indoramine and alcohol may be raised by the concurrent use. The combination of alcohol and indoramine has been reported to increase the drowsiness, which may possibly increase the risk when driving or using machinery. The same example we have discussed in the last lecture. Prazosin appears to enhance the hypotensive effect of alcohol. मतलब यहाँ पर अल्कोहल और अल्फा ब्लॉकर के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे they have given the clinical evidence and also they have given on which mechanism this is going to happen and also the importance and management, and they have given about the references also. One another example we will see. See, aspirin or other salicylates plus antacid. For this, the serum salicylate level of patient taking large anti-inflammatory dose of aspirin or other salicylate can be reduced to subtherapeutic level by some antacid. The maximum plasma level of aspirin may be increased by antacid, although the extent of absorption is unknown. देखिए यहाँ पे ऐसी स्टडी भी यहाँ पे that is available in Stockley drug interaction. देखिए again they have given for this clinical evidence, then mechanism, then importance and management, and they have given about the references also. So this is one of the website, or on the basis of website we can understand about the drug interaction. Then afterwards, one another site is there, Flockhart syndrome P50 isoenzyme site. This is accurate and this one is a current. यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन उसके बारे में साइटोक्रोम P450 के ऊपर फोकस करके यहाँ पे जो भी उसके आइसोएंजाइम है, फॉर एग्जांपल करंटली A12, 2B6, 2C8, तो इसके बारे में जो भी है डेटा और द इंटरेक्शन दैट हैज बीन पब्लिश्ड ओवर हियर. फर्स्ट वी विल सी रिगार्डिंग दिस दैट Flockhart cytochrome P450 isoenzyme, the website we will see. See, this one is a data. This is known as a Flockhart table. This is for a 3A457 isoenzyme substrate. 3A457 substrate, उसके बारे में यहाँ पे भी ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन फिर लिखा है, और उसके बारे में एक आर्टिकल भी यहाँ पे पब्लिश, जो भी आर्टिकल that gives the evidence about this interaction that has been written over here. This is regarding the alprazolam. So this is one of the Flockhart table. On the basis of this, we can understand about the drug interaction. Then there is one main table on this website. One of the main table that is given. We will see that one. यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, अगर साइटोक्रोम है P450, उसकी जो आइसोएंजाइम फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, A12, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A457. तो आइसोएंजाइम और ड्रग के बीच में जो भी इंटरेक्शन है, तो we can have this study or we can have direct report about this interaction. And this site is particularly useful for screening for suspected metabolic interaction, but it does not predict the clinical relevance and excludes many metabolized medicine for which the isoenzyme system involved has not been identified. मतलब यहाँ पे this give the information
about the suspected metabolic interaction only, and it does not refer or does not predict the clinical relevance. मतलब इसका clinical relevance comparatively it is low, and it excludes many metabolized medicine. बहुत दूसरा भी मेडिसिन अगर कोई मेटाबॉलिज्म कर रही है तो that has been excluded. मतलब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है. We need to consider again the reliability of this information also. See, this one is the website. Flockhart table. देखिए पूरा टेबल है. यहाँ पे सबस्ट्रेट, जो भी सबस्ट्रेट है आइसोएंजाइम, उसके बारे में यहाँ पे दिया है इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे जो भी ड्रग है तो ड्रग के साथ जो भी इंटरेक्शन है या फिर रिएक्शन है तो यहाँ पे it has been noted. Then again also it has been given for a inhibitors also. Inhibitors उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है. फॉर एग्जांपल कोई एक ड्रग है साइमेटिडिन है, तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे the website it will give the information about the drug interaction. देखिए यहाँ पे one more thing is there, strong inhibitor. यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन में दिया this red, that is it shows the strong inhibitor, then moderate inhibitor, weak inhibitor, and TBD inhibitor. For example, see this one, ciprofloxacin inhibitor A1-2, inhibitor 1A2. तो इसका जो भी सबस्ट्रेट है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है. Then it greatly increases the concentration and hypotensive effect of tizanidine by inhibiting its cytochrome P450 1A2 mediated pre-systemic metabolism. मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको कि ड्रग इंटरेक्शन क्या है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन में और बाय विच मैकेनिज्म. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसके ऊपर से वी कैन स्टडी द ड्रग इंटरेक्शन. सो मेनली दिस टू website that is useful. Then based on the book reference, drug interaction they are listed in a different ways in each compendium हमें मिल जाएगा. Then some compendium they are listed drug interaction at the individual drug level. For example, बहुत सारे compendium में क्या होता है कि specially they are targeting the drug. For example, triazolam, ketoconazole, triazolam, itraconazole, alprazolam, ketoconazole. So directly it has been given in between the drug, whereas other listed them at the medication class level. मतलब medication class level जो भी उनका है benzodiazepine, the interaction in between benzodiazepine and azole antifungal agent, with each individual drug listed under the respective medication class heading. मतलब drug interaction में based on the book reference we can have on the basis of in between the drug and on in between the class of the medication. तो ये सब हमें बुक रेफरेंस से भी मिल जाएगा. देन कंप्यूटर स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग इंटरेक्शन डेटा जो भी हमारे पास अभी तक है. तो अगेन द स्क्रीनिंग दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन बहुत बार देखिए ये सब जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो फार्मासिस्ट जो भी वर्क कर रहा है तो उसके वहां तक ये सब डेटा पहुंचना चाहिए. तो बहुत बार क्या होता है कि डेटा वहां तक पहुंचता नहीं है. So screening that is also important. The drug interaction data that is used to identify drug interaction trend, identify drug interaction for education purpose also, compile the information about drug interaction to induce the pharmacist's productivity, identify the frequent drug interaction for the pharmacist education. देखिए frequent drug interaction जो भी है तो it should be known to the pharmacist and prepare the data for the pharmacy and therapeutic committee reports or in a newsletter. तो जो भी डेटा हमारे पास है तो it should be published everywhere. So the pharmacist he will come to know about this. And the current computer tools, we can say the current computer tools for detecting drug interaction, there is a need of improvement. तो यहाँ पे अभी भी हमें improvement की जरूरत है. तो जिसके कारण अभी तक पता नहीं चलता, बहुत बार कम्युनिटी फार्मासिस्ट है तो उसको मालूम नहीं है या फिर the data that has been not published, that's why he is not aware about the recent drug interaction. Then there are also some limitation. The primary limitation we can say that is the immense amount of data. देखिए बहुत बड़ा डेटा है, लार्ज अमाउंट है,
that is on interaction, and the absence of method to disseminate the information rapidly. मतलब कोई स्पेशल कोई मेथड या फिर टेक्निक नहीं है कि इसको स्प्रेड करना है, अगर तो जल्दी से स्प्रेड कैसे करें. There is no method like this. This is one of the limitation. Then another one, that is other problems include a lack of epidemiological logic information and the complexity of the patient, multiple disease, multiple medication. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पेशेंट है या फिर पर्सन है तो he is having the multiple disease, तो ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा. He is using multiple medication and sometimes this is not known to the pharmacist also, and many factors that prevent the pharmacist from being able to detect, evaluate or avoid the drug interaction. देखिए मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट इज कॉन्टेक्टिंग मल्टीपल फिजिशियन. मतलब एक बार डॉक्टर को दिखाया है, ठीक नहीं हुआ तो he will go to another physician, and also he will take the prescription, or he will fill the prescription from one drug store, and next time he will fill the prescription from another drug store. मतलब मल्टीपल फार्मेसी भी यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर पेशेंट है, if he is taking over the counter product, OTC product, then in such a condition the data or the resource that will not be available with our system, or we can say that will not be reached timely to the pharmacist. तो यहाँ पे computer screening है, computer screening that is difficult due to such type of limitation. Then one of the micromedics they are used, one of the software is there, and computer based drug interaction software that is used to classify the severity of drug interaction, and also their severity they are giving the measure moderate, minor, none, and not specified like that. They are giving the scale. This is one of the website. You will see this website, Micromedic. See this one. Again, the login is required. They are giving the clinical knowledge, medication, disease, and toxicology management. So this information, such type of information, can be obtained on the basis of this website, Micromedics, or we can say they are giving the computer-based drug interaction software. Then prevention of drug interaction. देखिए यहाँ तक हमने जो भी डेटा डिस्कस किया है, that is regarding how we can have the drug interaction that will reach to us, और drug interaction को कैसे डिटेक्ट करेंगे, that we discuss over here. And now the prevention of drug interaction. देखिए अगर prevent करना है totally drug interaction, if you want to prevent, then there are some things or some things that need to be considered to the patient, pharmacist, and also to the doctor. So यहाँ पे कुछ point मैंने लिखे. For example, make sure that pharmacist and doctor that know about the every drugs are taken by the patient, including prescription and non-prescription drug. मतलब पेशेंट जो भी ड्रग ले रहा है तो उसके बारे में फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों को मालूम होना चाहिए. देन गेट ऑल प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड एट सेम फार्मेसी. जो भी प्रिस्क्रिप्शन अगर फिल हो रहा है तो इट शुड बी फिल्ड फ्रॉम द वन फार्मेसी स्टोर. अलग अलग फार्मेसी स्टोर से फिल नहीं होना चाहिए, एक ही जगह से यहाँ पे फिल अप करना चाहिए. देन डोंट स्टॉप टेकिंग ए ड्रग विदाउट चेकिंग विद द डॉक्टर. देखिए बहुत बार क्या करते हैं कि इरिटेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे पेशेंट, दे विल स्टॉप द मेडिकेशन, बट इंस्टेड ऑफ दैट बिफोर स्टॉपिंग एनी मेडिकेशन ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर वेदर दिस शुड बी स्टॉप और नॉट. डोंट कीप ओल्ड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन इन मेडिसिन केबिन. देखिए अभी क्या हर एक के पास अभी मेडिसिन केबिन रहता है, मेडिसिन बॉक्स रहता है, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ड्रग एक साथ इकट्ठी हो गई है तो यहाँ पे कुछ ड्रग एक्सपायर्ड भी हो जाएगी. बहुत बार पेशेंट एक्सपायर्ड मेडिसिन भी ले लेते हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर एक्सपायर्ड ड्रग लिया है तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन और एनी एडवर्स ड्रग रिएक्शन. सो डोंट कीप सच थिंग्स इन योर मेडिसिन केबिन. देन इफ पेशेंट हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न about the medicine or drug having an adverse drug reaction or drug interaction, then
they should consult the pharmacist or physician immediately. देखिए अगर कोई पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है और there is a drug interaction, then initially they should consider they should consider to the physician or they should consult about the pharmacist. अगर यहाँ पे pharmacist को consult करते हैं तो pharmacist he will explain the things to the physician, and on the basis of that there might be the dose will be changed, or there might be the drug will be changed by the physicians. So this should be some care or some things that should be considered to patient also, to pharmacist as well as to the doctor. There's all the things to control or to prevent the drug interaction. We should have such a knowledge about the medication. So this is about the detection. We discuss over here about the detection method, or how we will detect the drug interaction on the basis of in vitro and animal data, then on the basis of case report, clinical study reports, review, monograph, book sources, drug table, drug chart, drug data sheets, then drug interaction website we need to consider, and on the basis of literatures we can understand about the drug interaction. Thank you for watching this video.